Hello students, the question is a galvanometer of resistance 100 ohm is converted into an ammeter of range 0 to 1 ampere using a resistance of 0.1 ohm. The ammeter will show full scale deflection for a current of about option A 0.1 milliampere, option B 1 milliampere, option C 10 milliampere and option D 0.1 ampere. So the problem is based on the topic the electric instruments, and in this particular question we have to answer for the ammeter. So the basic concept here is that the galvanometer can be converted into an ammeter by placing a shunt across it. Shunt means in the parallel path. So suppose there is a galvanometer, and if we place a small resistance in parallel to it, then this particular arrangement is known as ammeter. Now this particular galvanometer, let us suppose its resistance is G, and the shunt we have connected is having a resistance of S, which is given as 0.1 ohm. It is also given that the range is 0 to 1 ampere. So for this particular arrangement, the current going is 0 to 1 ampere. Maximum current that can go through this arrangement is 1 ampere. So what is the full scale deflection of the galvanometer? So we have to find out the maximum current that passes through this galvanometer. Full scale deflection means the maximum current which is passing through this galvanometer. Now let us call this current as Ig. Ig is the current through the galvanometer. And suppose the current flowing in this particular total arrangement is I, then this current going in S, which is shunt, is I minus Ig. So now you can easily see that the galvanometer and shunt, these are in parallel, and in parallel we know that the voltage is same. So we use this concept. So we have to equalize the voltage across the galvanometer as well as the shunt. And to calculate the voltage, we use the Ohm's law. The Ohm's law states that the voltage across any element is equal to the product of current and the resistance of it. So the voltage across the galvanometer is given by Ig multiplied by the resistance of galvanometer, which is capital G, and this is equal to the voltage across the shunt, and voltage across the shunt by the Ohm's law, the current is I minus Ig, and the resistance is S. So this is the equation that we get. Ig we have to calculate the value of Ig. Galvanometer resistance is given as 100, so this is 100 ohms. Then I is the current which passes through this whole arrangement, and for the full scale deflection of the galvanometer, this I is the maximum value, and the maximum value is given as 1 ampere. So we put here 1 minus Ig we have to calculate, and S is given as 0.1 ohms. So this is the equation. Now we are going to solve it. So this becomes 100 Ig, and this becomes 0.1 multiplied by 1 is 0.1, and 0.1 multiplied by Ig is 0.1 Ig, and we take this term here. So this becomes 100.1 Ig. This is equal to 0.1, or we can say that Ig equals to 0.1 upon 100.1. So this becomes 1 upon 1001, nearly equal to 1 upon 1000, which is equal to 1 into 10 raised to the power minus 3 ampere, and which is equal to 1 milliampere. So 1 milliampere is the current which is flowing through this galvanometer. That is full scale deflection value of the current of the galvanometer. So in this way we can say that option B is correct here. Option B is the correct answer. Hope you understand this explanation. Now let me explain the whole thing in Hindi also. So एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 100 ओम, उसको कनेक्ट किया गया है, उसको कन्वर्ट किया गया है एक एमीटर में, और एमीटर की रेंज है 0 to 1 एम्पियर की। उसके लिए एक रेजिस्टेंस यूज किया गया है 0.1 का। ये हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में लिया जाता है जब कभी भी हमें गैल्वेनोमीटर को
एमीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारा 0.1 एम्पियर 0.1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। द एमीटर विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन। एमीटर कब शो करेगा, कितना शो करेगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वो हमसे पूछ रहा है। यानी कि एक तरह से इस गैल्वेनोमीटर में पास होने वाली मैक्सिमम करंट IG के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें जो कंसेप्ट यूज करना है वो ये करना है कि हमें इन दोनों एलिमेंट्स, एक तो गैल्वेनोमीटर और एक इसके अक्रॉस जो शंट लगा है उसके अक्रॉस वोल्टेज को इक्वलाइज कर देना है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होती हैं और वोल्टेज निकालने के लिए हमें ओम्स लॉ यूज करना है। तो यहाँ पे अगर टोटल करंट आई है जो इन दोनों एलिमेंट्स में पास हो रही है, एंटर कर रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर IG करंट है गैल्वेनोमीटर में तो किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से जो करंट जाएगी शंट में वो जाएगी I माइनस IG। अब हमें क्या करना है कि वोल्टेज को बराबर रख देना है अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर एंड शंट। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा IG इंटू जी, क्योंकि जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का। इसको बराबर रख देना है वोल्टेज अक्रॉस द शंट, जिसके के लिए हम क्या करेंगे, जो करंट पास हो रही है शंट से विच इज I माइनस आई जी, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे शंट की रेजिस्टेंस से जिसको कि हम S कह रहे हैं। बाद में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। G की वैल्यू हमें गिवन है 100 ओम्स, S की वैल्यू गिवन है हमें 0.1 ओम्स और I की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 1 एम्पियर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन तब होगा जब मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर की उस पूरे अरेंजमेंट से पास हो रही होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको 1 पुट कर दिया। फर्दर हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो IG की वैल्यू 1/1000 एम्पियर यानी कि 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर आती है, जो कि अगर हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करें तो आती है 1 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा। सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन, होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।